the molecular masses. Okay. So I think you all are well aware about molecular masses. So you all can do this thing very easily, right? What we need to do, we just need to use molecular masses over here. What I'm saying in question number 1, just look at over here. The question number 1 is saying that you have copper sulfate, and over here you have X water molecules. And you can see there's the total MR of the substance is also given to you. The total MR is actually 250. So what we need to do, we just need to find out the value of X. In this, we need to find out the value of X, which is, I think, the simpler thing that we can do for 2 marks, right? So let's see, how can we solve this? So over here, we just need to write copper sulfate dot X H2O. This value of X we need to find out, right? And over here, we know that the overall MR of this substance is 250. So when we know the overall molecule so we can easily find it out, right? Yes, Bacho, can you hear me? Yes, sir. Everyone, Yes, can you hear me? We know that dot means plus, and we know that this X is actually one of the number, right? It's stoichiometric number, and this number is going to multiply with water. You need to keep remember these 2 things only. Then you will solve this question very easily. So we know that copper is 64 in MR, sulfur is 32, oxygen is 16 into 4, then plus X to be find it out, and hydrogen is 1 into 2 and oxygen is 16. That's it, right? So the copper sulfate is actually the total MR of copper sulfate is, it should be 160, right? And then plus X, and the inside the bracket it is 18, right? We just need to send 160 over there, and then we need to subtract this. So it will be 250 minus 160 will give you 90. And we know that this 18 is going to multiply with X. So definitely when it goes towards over there 90, so it is going to divide. So it should be 90 over 18. So it will give you the value of X, which is right now 5. Is it right, Bacho? Yes, sir. So I think this is the most simpler thing that you can do right now. For suppose over here we have one more question. You can see this. This is magnesium sulfate dot XH2O. We just need to find out the value of X, and the total MR is given, which is 246. So magnesium is 24, sulfur is 32, oxygen is 16 into 4. Is dot means plus X, and water is 18. So it is 246. The sum of all these is 64 plus 32 plus 26. I think it should be, बच्चों कितना होना चाहिए check करें. It should be, I think, 120, right? 246. Not all. I'm just asking about magnesium sulfate now. So it is, I think, 140. 120. I think. Yes. So we need to send this 120 over there because it is positive over there. So it will go over there and subtracted. So 246 minus 120 will give you what? It will give you 126. And we know that this 18 is actually multiplying over there. So what? Go over there and divide it. So it will be 1 and 7. So the right answer will be, bacho, 7 for the question number 2. 7. Right, everyone? Yes, sir. So now it's obvious for you. This is quite simple question. We just need to solve MR in this, and we can easily find out X, the value of X. And this is actually X H2O means this is actually water of crystallization. This is actually water of crystallization, the amount of, you can say that the amount of water molecules that are required to form crystals for the salts, right? So this is all about this. I think you can understand this in 2 examples, and the rest of 3 examples are for you. So just do it quickly and send me the answer so I can check you are getting the things. Just do it quickly, bacho. Very good. So just look at over there, but so if you want to find out percentage, so the same formula that you are doing in NAS are going to be applied over here as well. So just look at over here. They're asking for, in the first question, the percentage of nitrogen in ammonium phosphate.
So what is given? The given is nitrogen. They are saying that you need to find out the percentage of nitrogen in ammonium phosphate. तो टोटल क्या हो जाएगा? अमोनियम फॉस्फेट का एमआर और अमोनियम फॉस्फेट के एमआर के अंदर जितने नाइट्रोजन है, इट इज एक्चुअली गिवन. ठीक है, नाइट्रोजन अमोनियम फॉस्फेट में कितने हैं, डिवाइड बाय टोटल अमोनियम फॉस्फेट का एमआर एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100. सिंपल. जस्ट लुक एट ओवर हियर. द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन शुड बी, वी हैव 3 नाइट्रोजन्स ओवर हियर. जस्ट लुक एट ओवर देयर. अमोनियम लिखा हुआ है, उसमें एक नाइट्रोजन है और ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है. तो इसका मतलब ये हुआ है कि वी हैव 3 नाइट्रोजन in the overall molecule. So it should be a single nitrogen is 14, so the 3 nitrogens are into 3, right? And the total MR of ammonium phosphate is 14 plus 4, 1 into 4, actually for hydrogen, and into 3. 225. It is 31 for phosphorus and 64 for oxygen, because 16 into 4. देखो इधर 14 into 3 कितना हो जाएगा बेटे? 42 हो जाएगा, right? और नीचे वाले का क्या बता रहे हो? 249? 225. नहीं, it should be 149. इतना होना चाहिए. देखें, it is 18 3, जब 18 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, it is 54 plus 31. 149, sir. Yes, it's 149. So when you divide this 42 by 149 and into 100, it will give you the percentage of nitrogen in ammonium phosphate, and I think it should be, बच्चों, it should be 28.18. Yes, this is the percentage. Right, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. And over here, just look at over there in this question, this is urea. This is the most perfect, you can say that the fertilizer in the world for the nitrogen content, because it has the highest percentage of nitrogen in it. So we can use this for the for the plants growth, right? This having the highest percentage of nitrogen. So we can check this as well. We need to find out nitrogen in urea. So you can see this. We have 2 nitrogens over here. We have 2 nitrogens, so it is 14 into 2, right? Over, what is the total MR of this? It is 14 plus 2 into 2, and carbon is 12 and oxygen is 16 into 100. So it will be 2 into 14, 28, and then it is 16 into 2, 32. 32 plus 28, it is 60. So it is actually 28 over 60 give you into 100. क्या percentage आएगी बच्चों, check करें. It is, I think, 46.66%. Yes, sir. 46.66. Same. This is the way that how can you find out the percentage of any element in the compound. So in this way you can find it out, right? So over here we have 4 more questions. You need to solve the question number 2. You need to find out nitrogen in ammonium sulfate. In question number 3, you need to find out potassium in potassium nitrate. In 5th one, you need to find out phosphorus in potassium phosphate, and in 6th one, sulfur in iron sulfate. So जल्दी से ये 4 percentages मुझे निकाल के दिखा दीजिए, ताकि मुझे confirm हो जाए कि how can we find out the empirical formula. For this, you need to know what is empirical formula is. बच्चे empirical formula क्या होता है? For suppose you have C6H6. This is one of the molecular formula of any compound. So what is molecular formula? Molecular formula is showing you the exact number of atoms. The formula which is showing you the exact atoms of each element is known as molecular formula. So if we take simplest ratio of this, it is 6 carbon and 6 hydrogen. So simplest ratio is 1:1. So it is actually CH. So the simplest ratio is empirical formula. Simplest ratio is actually the empirical formula. So you need to keep remember that we are going to find out the simplest ratio between the elements, right? The simplest ratio. Okay, ये एक था, इससे 2 हाइड्रोजन मिले, ये एक था, इससे 3 ऑक्सीजन मिले. तो simplest ratio जो होगा वो हम find out करेंगे empirical formula के through, right? Every one of you, can you hear me? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. just over here, बच्चों, the question number 1 is saying, just look at over the question, what they are saying, वो थोड़ा सा आपको trap करने की कोशिश करता है question में. They are saying oxide of copper. They are saying oxide of copper having 80% copper. यानी कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ कॉपर का कंपाउंड है. कॉपर और ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज वो कह रहा है ऑक्साइड ऑफ कॉपर, तो सिर्फ ऑक्सीजन और कॉपर हो सकता है. सो कॉपर की ऑक्साइड है, और क्योंकि ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन होगा.
और उसने बताया कि हमारे पास 80% कॉपर है। तो कोई भी कंपाउंड जो होता है वो 100% होता है। जब 80% कॉपर हो जाएगा तो 20% यू शुड हैव ऑक्सीजन, अगर आप इसको 100 में से माइनस करते हैं। इज इट राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. दैट ये आपका पहला परसेंटेजेस आपको मिल गई हैं। अब पहला स्टेप जो होगा ना, आपका पहला स्टेप, आप क्या करोगे, इनको क्या करोगे, आप पहले स्टेप में डिवाइड बाय देयर एटॉमिक मासेस। पहला स्टेप आपके पास क्या होगा कि यू नीड टू डिवाइड देम बाय देयर एटॉमिक मासेस। पहला स्टेप ये है कि आप उनको उनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करा दो। तो कॉपर का एटॉमिक मास इज 64, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज एक्चुअली 16। इज दैट राइट बच्चों? इतना ही होता है। Yes, sir. Yes, sir. When you are going to divide copper 80 by 64, so what should be the answer? 80 and it should be divided by 64, so it would give you what bachcho? It would give you 1.25, right? Yes, sir. And when you are going to divide 20 by 16, so it will give you again the same thing, which is 1.25, right? Right, sir. Yes, sir. अभी यहाँ तो सेम आ गया। अभी इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि यहाँ पर सेम आ गया। अगर सेम नहीं आता तो क्या करते? सेम अगर नहीं आता तो हम सिंपलेस्ट जो होता है ना, सबसे छोटा वाला जो होता है ना, सबसे छोटा वाला, उससे डिवाइड कराते हैं। तो अभी आपने यहाँ पर डिवाइड कराना, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा होगा उससे डिवाइड कराएंगे। अभी दोनों ही एक जैसे हैं तो आप किसी से भी डिवाइड करा दें। डिवाइड बाय 1.25, डिवाइड बाय 1.25, सो इट इज 1 and it is 1. So it is giving us the ratio कि आपके पास कॉपर 1 है तो उसके साथ ऑक्सीजन भी 1 ही है। तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों? इट इज CuO, right every one of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Any problem? No, sir. No. Okay, so let's see the next one. यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं हम। वो कैसा हो सकता है? They are saying that you have oxide of iron. So we have iron and oxygen only, right? And they are saying that iron is 70%, so the rest of the percentage is for oxygen. So it is actually 70-30, right bachcho? Yeah. So the MR, the first step is dividing by the MR. So the MR of iron is 56 and the MR of oxygen is 16. So if we divide 70 by 56, so we will get the answer. It is 1.25. And if you divide 30 by 16, so you got the answer 3.75, right बच्चों? Yeah. Yes, sir. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? हमने दोनों के एटॉमिक मास से डिवाइड किया, और दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है? जो स्मॉलर है उसको दोनों से डिवाइड कर दें। तो which number is smaller बच्चों? Sir, 30 by 1.25. 1.25. So we need to divide both of them by 1.25. So when we divide both of them by 1.25, so it is 1 and 3. 1 and 3. Is that so? ऐसा आना चाहिए आंसर। Sir, 30 upon 6 is 1.875. यस, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम Sir? लग रहा है। वो प्रॉब्लम क्या है? 30 divided by 16 is actually 1.875. So the correction is here. Sir? जी बेटे। सर अगर आंसर जो है क्या कहते हैं डेसिमल्स में आ रहा हो तब क्या करेंगे? जैसे अब आयरन का 1.2 1.3 आ रहा हो तब क्या करेंगे? देखो 1.5 आ रहा है, सही है। आंसर क्या आ रहा है आपके पास? Yes, sir. 1.5। तो जब ऐसा कोई आपके पास नंबर आ जाए कि एक 1 है और एक 1.5 है, तो आप फॉर्मूला नहीं लिख सकते इस तरह कि भाई हमारे पास आयरन 1 है और ऑक्सीजन इज 1.5। वी कैन नॉट राइट लाइक दिस। तो हमें चाहिए होल नंबर। हमें चाहिए बच्चों क्या? होल नंबर। तो होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। हमें इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ऐसे नंबर से जिससे ये खुद ब खुद होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो बताएं, इफ यू हैव 0.5, तो 0.5 को होल नंबर बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई कराना चाहिए? Multiply सर with 2 1. से करवा दें। 2, sir. इन्हीं सबसे पहले जब सबसे छोटा होगा उससे ट्राई करेंगे। तो सबसे छोटा 2 है। तो अगर ऐसा कोई नंबर हो, जैसे आपके पास 4.5 लिखा हुआ हो, 3.5 लिखा हुआ हो, 1.5 लिखा हुआ हो, तो आप कोशिश करें कि दोनों को आप 2 से मल्टीप्लाई करा दें। एक को नहीं करा सकते, दोनों को कराना पड़ेगा आपको। सो द आंसर इज आयरन इज 2 एंड ऑक्सीजन इज 3। सो द फॉर्मूला विल बी Fe2O3। इज दैट राइट बच्चों? Yes, sir. Sir. Yes, sir. This is what empirical formula right now. So जल्दी से मुझे दूसरा वाला मतलब बाकी की जो 3 है वो करके दिखा दें, ताकि हमारा ये पार्ट भी जो है खत्म हो जाए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमारा टेस्ट है,
नेक्स्ट 2 क्लासेस जो है, मंडे वाले दिन आपका जो है थ्योरी का टेस्ट होगा और सैटरडे वाले दिन आपका जो है नेक्स्ट सैटरडे एमसीक्यू का टेस्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम इसके पास पेपर्स करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला के, ठीक है। जो आपने मोल्स पढ़ा है वो नहीं आएगा, जो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं वो आएगा खाली। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए, अभी फिलहाल हमें ये 3 पार्ट्स करने हैं, तो